वहां कोई बात नहीं करना मुझसे। Hello, hi everyone. Good evening. How are you all doing? My name is Zainab, and I welcome you all to our current legal knowledge session, Menti Quiz, wherein we are going to discuss about the current legal happenings for the month of November and December. So now the rules for the Menti quiz are the same as before. आपकी स्क्रीन पे आपको ऊपर एक कोड दिख रहा होगा, राइट? 20 24 37 85। उस कोड को, आपके पास अगर मेंटी ऐप है तो उस कोड को जाके एंटर कर दीजिए। इन केस नहीं है तो लिंक क्या, एक आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिख रहा होगा, go on to that link and you will be automatically entered inside the Menti quiz. So we'll wait for a few minutes, rather just a minute, and फिर हम आज का सेशन शुरू करते हैं। आई होप आप लोग की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। जो आपके नोट्स दिए जा रहे हैं आपको करंट लीगल नॉलेज के, आई होप आप वो रिवाइज करके आए हैं फॉर द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर, सिंस दिस इवेंट वाज टोल्ड टू यू लॉन्ग बिफोर। तो आप अपने आंसर्स अपने पूरे नोट्स अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं। तो लेट्स बिगिन with our today's session, considering it's been a minute since, and I hope कि आप सब लोग join कर चुके हैं. So let's begin with our first question for the day. The first question is, the dash bench of the Bombay High Court has held that touching the feet of or any part of the woman's body amounts to outraging her consent, and that too in the dead of the night with a stranger amounts to outraging her modesty. Replace the above blank with the correct option. The options are Bombay High Court, Aurangabad High Court, Nagpur High Court, or the Goa High Court. The correct answer is Aurangabad, bench of Bombay High Court. Yeah. इसके अंदर क्या बोला गया था? इसके अंदर सिर्फ इतना बोला गया था कि if you at all touch any part of the female without her consent, then it amounts to outraging the modesty of a female, which you must not do. इसके ऊपर हमारा एक पूरा प्रॉपर सेशन भी हुआ है जहां पे मैंने आपको एग्जैक्टली बताया था कि व्हाट डज आउटरेजिंग द मोडेस्टी ऑफ अ फीमेल बेसिकली मीन, और उसका एक टेस्ट भी दिया था रूपन दियोल बजाज केस में कि वो टेस्ट क्या है, और वो मैंने आपको पूरी बात बताई गई थी। एक और चीज जो कि मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करना चाहती हूँ, यहाँ पे बेंच ने ये बात भी कही थी कि जो एक विमेन की मॉडेस्टी होती है वो उसका एक इनहेरेंट राइट होता है, एंड शी एक्वायर्स दिस राइट फ्रॉम द टाइम शी इज बॉर्न। ठीक है, तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so the next question is, recently the Delhi High Court's division bench decided on a petition filed by a BJP candidate Yogendra Chandolia against which of the following MLAs which concealed his educational qualification in his nomination affidavit filed for the last year's assembly polls. ये बात हमने एक YouTube के सेशन में भी की थी जहां पे मैं आपको मंथली राउंड अप बताई थी। So let's see if you recollect. The options are Imran Hussain, Alka Lamba, Dinesh Mohania, Vishesh Ravi. Come on guys, quickly go on to the correct answer. हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं। The options are Imran Hussain, Alka Lamba, Dinesh Mohania, Vishesh Ravi. Okay. I was thinking कि आप सबके सही जाएगा। The correct answer here is विशेष रवि। Recently योगेंद्र चांदोलिया ने विशेष रवि के ऊपर एक केस किया था कि दिल्ली के जो इलेक्शंस हुए थे, दिल्ली के असेंबली पोल्स हुए थे, उसके अंदर विशेष रवि ने अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सही से नहीं बताई थी, और उन्होंने अपना पास क्रिमिनल जो पास क्रिमिनल एंटीसीडेंट है उसको डिक्लेयर नहीं किया था। ठीक है, तो उन्होंने ये केस एक्सेप्ट हुआ था in the court, ठीक है, against Vishesh Ravi. This case was filed by who? This case was filed by Yogendra Chandolia. Let's move on to the next question. According to the Delhi High Court's recent observation, false declaration about educational qualification
falls under Section 123 of Representation of People's Act. Which of the following does not form a part of Section 123 Clause 4 of the Act? ठीक है कि कौन सा ऐसा पार्ट है जो इसके अंदर फॉल नहीं करता है, राइट? ओके, लेट्स मूव ऑन टू द ऑप्शंस. The options are taking bribe, non-disclosure of the criminal antecedent, asking for votes on the ground of language, none of these. Which of the following amounts to corrupt practices? Option A, option B, option C, or option D. ये बात आपको याद होगी, मैंने एक यूट्यूब सेशन में भी आपको ये बात बताई थी और हमारी क्लास में भी हमने ये बात बताई थी, नोट्स में भी ये बात मैंने लिखी थी कि व्हाट ऑल अमाउंट्स टू करप्ट प्रैक्टिसेस. सो गेट गोइंग, करेक्ट, सिलेक्ट इन द करेक्ट आंसर. Very good, guys. Very good. The correct answer here is none of the above. ठीक है? Taking bribes, obviously, it is a corrupt practice. Non-disclosure of criminal antecedents, obviously, it's a corrupt practice. अपना आप educational qualification को conceal करें, ये भी एक corrupt practice है. या आप votes को ask करें onto the grounds of religion, onto the grounds of religion symbols or something of that sort, ये भी एक corrupt practice है. ठीक है? Let's move on to the next question. Okay, the Delhi High Court deciding on an appeal filed by the husband challenging a family court's order rejecting his plea to abolish the marriage on the ground that the wife was suffering from schizophrenia held that failure to disclose mental disorder before marriage constitutes fraud. Which of the following is not a ground which makes the marriage void? ठीक है? Okay, guys. Moving on to the options. The options are unsoundness of mind, parties which are sapinda to each other, prohibited degree of relationship, all of the above. Answer very wisely. The words used were कि which of the following makes it void, right? बहुत ध्यान से करिए. इसको हमने क्लास में भी बहुत वाइडली डिस्कस किया है कि कौन कौन से ऐसे ग्राउंड्स होते हैं जिन पे मैरिज वॉइड हो जाती है, कौन कौन से ऐसे ग्राउंड्स हैं जिन पे मैरिज वॉइडेबल हो जाती है, कौन कौन से ऐसे ग्राउंड्स हैं जिन पे मैरिज वैलिड रहती है. सो आंसर बहुत ज्यादा अच्छे से सोच के. उप्स. तो आप लोग को याद होगा यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था, मैंने आपको ये बहुत क्लियरली बात बताई थी कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से मैरिज वॉइडेबल होती है, वॉइड नहीं होती है. ठीक है? इफ यू वांट टू मैरी एन अनसाउंड पर्सन यू कैन डू सो, बट वो एक वॉइडेबल मैरिज रही होगी. यहाँ पे तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें एक बहुत एक बहुत इलेबोरेट डिस्कशन बताया था एज टू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द annulment ऑफ अ मैरिज एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिवोर्स, राइट? तो यहाँ पे हमने इस केस के अंदर ये भी डिस्कस किया था. तो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इज द करेक्ट आंसर हियर. ओके, नाउ moving on to the next question. Which of the following state have recently, via its state legislation, have decided to banning online gaming of chance, treating it as a menace, is one of its kind in the country? ठीक है? बैन क्या किया था? ऑनलाइन गेमिंग ऑफ चांस को बैन किया गया था. कौन से स्टेट ने किया था? मार्क योर आंसर्स. आई विल शो यू द ऑप्शंस राइट नाउ. The options are Maharashtra, Tamil Nadu, West Bengal, or Karnataka. Which of the following states have banned online gaming of chance? I believe the answer is very simple here. हमने इसके ऊपर एक अमेंडमेंट भी रिसेंटली आया था इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, उसके ऊपर भी हमने डिस्कस किया है. तो कौन से स्टेट ने वो बैन किया है? Very good, guys. The correct answer here is Karnataka.
कर्नाटका ने रिसेंटली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर कर्नाटका पुलिस अमेंडमेंट एक्ट उन्होंने लाया था, जहां पे उन्होंने ऑनलाइन गैम्बलिंग को ऑल टुगेदर बैन किया है, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर हियर इज कर्नाटका। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so now we have a leaderboard. Okay. I really hope that you all are excited. Okay, so the first position is backed by Johnny. Second is by Agent. Third is by Angel with a snake. Then it's Mohit, Apurva. Okay. And then the rest. ठीक है? तो buck up guys. कोशिश करो कि अगर अभी आप थर्ड या फोर्थ पोजीशन पे हैं या सेकंड पोजीशन पे हैं तो ट्राई गोइंग ऑन द फर्स्ट पोजीशन। यू आर डूइंग रियली वेल। बस थोड़ा सा और मेहनत एंड यूड बी देयर। ठीक है, चलो लेट्स गेट गोइंग, आगे बढ़ते हैं। ओके, recently a decision is reserved by the High Court of a state on a petition challenging the act of the state government banning all forms of online games involving wagering, betting, gambling of all nature and forms in the state. The petition filed by the state while arguing that there's a distinction between game of chance and game of skill. The game of skills are protected under which article of the Constitution of India? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, अब now we'll be moving on to the options. The options are the options are getting displayed. Be very quick. The options are Article 19, Clause 1, Subclause F, Article 19, Clause 1, Subclause G, Article 19, Clause 2, Subclause G, Article 19, Clause 6, Subclause 2. ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा होगा तो ये बन जाएगा। गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ स्किल्स के बीच में हमने एक बहुत इलैबोरेट डिस्कशन किया था इन द क्लास, यूजिंग वेरियस एग्जांपल्स, शोइंग यू अ लॉट ऑफ थिंग्स कि ये गेम ऑफ चांस है, ये गेम ऑफ स्किल है, और उनके बीच में हमने डिफरेंस भी समझा था। गेम ऑफ स्किल्स आर प्रोटेक्टेड अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कम ऑन गाइस, गेट गोइंग। Very good, guys. Very good. Very happy for you all. Article 19, Clause 1, Subclause G, which protects which guarantees you right to freedom of trade, occupation, and business. Right? So let's move on to the next question. Okay, very important question. I believe कि इस बार आ सकता है. Recently, the Dash High Court issues directions to streamline policy for the participation of women athletes with disability in sporting events. The petitioner, Y, ये Y कौन है आपको बताना है, having been denied the opportunity of the participation in the 4th World Deaf Athletics Championship 2021, which was held in Z. अब आपको ये बताना है ये X, Y and Z क्या है, ठीक है? Let's move on to the options. The options are Madras High Court, Vijaya Salamat, Poland. Option B, Karnataka High Court, Samiha Salamat, Netherlands. Option C, Madras High Court, M. Samiha Barwin, Poland. Option D, Karnataka High Court, M. Vijaya Barwin, Netherlands. Come on guys, get going, mark the correct answer. ये हमने बहुत widely इसकी guidelines डिस्कस की थी, both on YouTube and in our classes, right? तो बहुत अच्छे से इसको मार्क कीजिए। ऊपर जो मैं आपको केस का नाम देती हूँ, यहाँ से आपको थोड़ा सा एक हिंट देती हूँ कि आपको शायद से समझ में आ जाएगा। Very good guys, very good, very good, very impressed by you all, like all the people who marked the correct answer. The correct answer is C. Madras High Court has issued those guidelines. And who किसके साथ हुआ था वो जो कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन रहा था on to the basis of the fact that she is a female and she is disabled, वो हुआ था M. Samiha Barwin के साथ। और ये गेम जो था, this game was organized in Poland and अगर मैं थोड़ा और स्पेसिफिक जाऊं तो in Lublin. World Deaf Athletics Championship is a quadrennial event. ये इवेंट होता है 4 साल में एक बार, ठीक है? तो वेरी गुड, वेरी इम्प्रेस्ड, कीप इट अप। आगे बढ़ते हैं। Okay. Now read this very carefully. Recently, the Kerala High Court held that unequal treatment of wives, violative of Quranic injunctions,
ground to grant a divorce to Muslim wives. The petition in the above case was filed on the grounds mentioned under the Dissolution of Muslim Marriages Act of 1939. Which of the following is not a valid ground by which a woman married under the Muslim law shall be entitled to obtain degree for dissolution of a marriage under the Dissolution of Muslim Marriages Act? Grounds क्या क्या options क्या क्या हैं? A. The husband was impotent at the time of marriage and continues to do so. B. Husband has neglected or has failed to provide her maintenance for a period of 2 years. C. Husband has failed to perform without reasonable cause his marital obligations for a period of 3 years. And D. None of the above. ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना. Here there is a trick. I will be telling you the trick once we will be done with this particular question. ध्यान से पढ़ो, giving you a minute. Okay. The I hope आपने ध्यान से पढ़ा हो. ये ऑप्शंस क्या थे? गो ऑन. A, B, C और D. इनमें से क्या करेक्ट आंसर है? अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा क्वेश्चन को तो आपको ये आंसर सही से बनेगा. गेट गोइंग गाइस. एक वहां पे ट्रिक थी. वो ट्रिक क्या थी? वील बी डिस्कसिंग. Time's up. Okay. Very good guys. The answer is D here. ठीक है. तो I was telling you of a trick there, right? ये वाले क्वेश्चंस जब आते हैं, जब ये आपसे ग्राउंड्स की इन सब की बात करते हैं, तो ध्यान से पढ़ो कि वो वहां पे क्वेश्चन क्या था? Which of the following is not a ground, right? वो कौन से ऐसे ग्राउंड की बात कर रहा था? ऐसा कौन सा ग्राउंड है जो कि यहाँ पे नहीं एप्लीकेबल होगा, राइट? तो जितने भी वहां पे ग्राउंड्स थे वो सारे के सारे एप्लीकेबल होते हैं. Having said that, अगर मैं डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट की बात करूं तो वहां पे मुस्लिम विमेन के पास ग्राउंड्स हैं. रिमेंबर, एक मुस्लिम विमेन के पास ग्राउंड्स हैं कि वो अपनी मैरिज को डिसोल्यूट कर दे. इसके ऊपर भी हमने बहुत इलेबोरेट डिस्कशन किया था कि क्या क्या ग्राउंड्स हैं. इन टोटल देयर आर 8 ग्राउंड्स. हमने हर एक ग्राउंड के ऊपर इनफ एग्जांपल्स दिए थे और इस चीज को डिस्कस किया था. आई एम वेरी हैप्पी दैट माय मेहनत इज नॉट वेस्टेड और आपने करेक्ट आंसर चूज किया. Here the correct answer is D, none of the above. जितने भी grounds वहां पे mentioned थे वो सारे के सारे under dissolution of Muslim Marriage Act हैं. ठीक है, चलो let's move on to the next option. Next question. Okay, I believe ये बहुत ही widely discussed question है, बहुत ही widely discussed news है rather. Bar Council of which of the following states has notified rules for payment of stipend up to 5,000 per month for lawyers with less than 3 years of practice. Okay, moving on to the options. I really hope and believe कि आप लोग का ये सही जाएगा. This was one such news जो कि बहुत ज़्यादा was into talks. Option number A, Tamil Nadu. Option number B, Goa. Option number C, Karnataka. And option number D, Kerala. Get going, guys. I am pretty certain आप लोग का ये आंसर सही जाएगा. We have discussed this in the class. We have discussed this onto YouTube. I have also provided you notes onto this. So let me know which is the correct answer. मैंने आपको यहाँ पे ये भी सिखाया था कि ये जो स्टाइपेंड मिल रहा है किन किन को मिलेगा, इसकी क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं, ये रूल्स ऐसे आए हैं तो कब आए हैं और कैसे आए हैं, पूरे हम इसकी जेनेसिस डिस्कस कर चुके हैं. Very good guys. The correct answer is D, Kerala. Very good. Okay. तो केरला ने ये जो अभी नोटिफिकेशन लाया है ऑफ 18th of December 2021, वहां पे उन्होंने पेमेंट ऑफ स्टाइपेंड के लिए बोला है टू दोज पर्टिकुलर एडवोकेट्स हु आर प्रैक्टिसिंग बिफोर द कोर्ट. और यहाँ पे उन्होंने ये जो रूल्स लाए हैं ये लाए हैं अंडर द केरला एडवोकेट स्टाइपेंड रूल्स. यहाँ पे एक उन्होंने क्वालिफिकेशन डाला है, ये सिर्फ उन्हीं को मिलेगा
जिनकी एनुअल इनकम इज लेस देन ₹1 लाख. ठीक है, वेरी वेरी गुड, कीप इट अप, वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू ऑल. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay. Recently, the Supreme Court benches of Justice Suryakant, Justice D.Y. Chandrachud, Justice Vikram Nath held that initiation of disciplinary proceedings against persons with mental disability facet of indirect discrimination. As per Section 3 of which of the following Act provides a general guarantee against non-discrimination and equality to persons with disability. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, ध्यान से पढ़ा. लेट्स मूव ऑन टू द ऑप्शंस. Oh, I believe there is some issue here. Just a second. Just a minute. I think यहाँ पे कुछ issue है. Let me move to the options. Okay, yeah. So is it Right of Persons with Disability Act 2016, Right of Persons with Disability, Right of Disabled Persons Act 2012, Right of Persons with Disability Act 2012, या Right of Disabled Persons Act 2016. बहुत कंफ्यूजिंग नाम है, ध्यान से सुनी होगी क्लास तो तुम्हें ये क्वेश्चन इजीली बन जाएगा. तो गेट गोइंग, मार्क योर आंसर्स. I believe majority of you will give the correct answer, but let's see. Confusing hai options, I agree. Okay, time's up. Very, very good, guys. The correct answer here is Right of Persons with Disability Act 2016. जितने भी लोग नोट्स देख रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें बहुत क्लियरली ये चीज वहां पे लिखी हुई दिखी होगी कि इस एक्ट का नाम क्या है. ये हमने बहुत वाइडली इसके ऊपर पूरी पूरी बात की थी कि राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट आया तो आया कहाँ से, व्हाट डज इट गारंटी, इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं. वेरी गुड, वेरी हैप्पी फॉर यू ऑल. ठीक है, चलो नेक्स्ट. Leaderboard. Now we have the leaderboard in front of us. Okay, let's see. Okay. Positioning. Okay, ठीक है. Very good. अपूर्वा पहले शायद लिस्ट में नहीं थी. अपूर्वा, is on the top, followed by Samir, who gave the fastest answers up till now. Then Angel, then Mohit, then Chinmay. Okay, very good, guys. Very good. Let's move on to the next set of questions. Which of the following High Court recently quashed an order dated 18th March 2021 passed by the Foreigners Tribunal against the petitioner who was declared a foreigner by the Foreigners Tribunal? Contrary to an earlier order passed by the tribunal in 2016, holding that she was not a foreigner or an illegal migrant. Moving on to the options. I hope question आपने ध्यान से पढ़ा हो कि what is the question asking you over there. The options are Gujarat High Court, Guwahati High Court, Manipur High Court और the Calcutta High Court. कौन से हाई कोर्ट ने रिसेंटली एक फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल का जजमेंट को ओवरटर्न कर दिया था? इसके ऊपर हमने बहुत इलैबोरेट डिस्कशन किया है इन द क्लास दैट व्हाई वाज दैट जजमेंट ओवरटर्न्ड. रिमेंबर, इसके ऊपर बहुत सारे केसेस भी हमने किए थे कि हाउ वाज इट ओवरटर्न्ड, व्हाट इज द रूल कंसर्निंग अराउंड दैट. सो 7 seconds more to go. 5, 4, 3, 2, 1. Perfect. Chalo, let's see if you guys get it correct. Very good, guys. Very good. The correct answer here is B, Guwahati High Court. Very, very good. Very good. So by the principle of res judicata, उन्होंने ये judgment को overturn कर दिया था और उन्होंने यहाँ पे ये बात कही थी that the principle of res judicata is applicable to Guwahati High Court. That the principle of res judicata is even applicable to Foreigners Tribunal. Now, before we move further,
कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी दैट फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल जो है वो क्या काम करती है एंड वेयर डज इट डिराइव्स इट पावर फ्रॉम? Answer in the comment section below. I will be reading your comments post the session. So let's see कि आपको क्या चीजें याद हैं, क्या नहीं याद है. ठीक है? चलो, let's move on to the next question. Okay, the next question reads, the Delhi High Court ruled that when an infringer seeks to defend patent infringement on the ground that the patent is invalid, the onus to prove invalidity lies heavily on them, and this standard has to be met when applying the principle of credibility. What is the time period of the patent granted? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तुम्हारे मॉक में आया है, इससे रिलेटेड हमने यूट्यूब पे बात की है और इससे ही रिलेटेड हमने बात की है इन योर क्लासेस एज वेल. सो आई बिलीव ये हम सबका सही जाएगा, बट लेट्स सी कि तुम लोगों को याद है कि नहीं है. ठीक है, रिसेंटली हमने डिस्कस किया था इसके ऊपर. मैंने तुम्हें बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दिए थे इसके ऊपर कि व्हेन इज पेटेंट ग्रांटेड, व्हेन इज पेटेंट नॉट ग्रांटेड, व्हाट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ क्रेडिबिलिटी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. Okay, so the options are A, 5 years, B, 10 years, C, 20 years और D, 50 years. जल्दी से बताइए क्या पेटेंट हमें कितने टाइम पीरियड के लिए मिलता है? जल्दी जल्दी, get going guys. So after every जब 5 seconds होंगे तो मैं आपको एक टाइमर दूंगी खुद से बोल के. तो we'll be starting with it. जल्दी से सिलेक्ट करो. Last 5 seconds to go. 4, 3, 2, 1. Okay, let's see what are the results. Very good, guys. Very, very good. The answer is C, 20 years. Very good. ये हमें कब से मिलते हैं ये 20 years का पेटेंट जो होता है? From the time that we file our application for the same, है ना? तो this is it. अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्वेश्चन पूछती हूँ. ये केस हमने डिस्कस किया था while I was telling you about a case between two leading companies. एक हिंट देती हूँ यहाँ पे, कंपनीज कौन सी है तुम्हें ये बताना है, किसने किसके ऊपर केस किया था ये बताना है. ये कंपनीज आर बेसिकली इनटू द मेडिकल लाइन एंड बिग बिग कंपनीज. तो इन कंपनीज का नाम क्या है? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो. ठीक है, लेट्स सी हाउ मच डू यू रिकलेक्ट, हाउ मच डू यू रिमेंबर. चलो, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, क्वाइट अ बिग क्वेश्चन. Okay, based on a Meghalaya High Court ruling on a case based on juvenile justice case on the age of the accused at the time of crime and arrest, which of the following statement is correct? A, under the POSCO Act, any offence committed by a child under the Act shall be dealt with under the provisions of Juvenile Justice Act of 2016. B, treating an accused who is 18 years and 2 months on the date of arrest as an adult is valid. C, the age of the accused on the date of occurrence of the crime is relevant, as well as the age on the date of arrest. And D, none of these. देखना क्या है? Which of the following statement is correct? ठीक है, पढ़ लिया. Do you want a minute? Done? चलो, we'll be moving on to the options now. देखते हैं कितने diligently तुमने ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है. ठीक है, चलो. The options are A, B, C and D. ठीक है, ऑब्वियसली क्योंकि इतना बड़ा स्टेटमेंट है तो वी कैन नॉट रियली राइट सो मच हियर, बट आई अज्यूम एंड आई बिलीव द फैक्ट कि आपने क्वेश्चन जब मैंने डिस्प्ले किया था तभी बहुत ध्यान से पढ़ा होगा. जो मैंने इससे पहले ट्रिक दी थी, जब भी ग्राउंड्स की बात आती है एक एक ग्राउंड को बहुत ध्यान से पढ़ा करो. ठीक है, दैट विल हेल्प यू इमेंसली कि कौन सा ग्राउंड इस पे एप्लीकेबल होगा, कौन सा ग्राउंड नहीं होगा. रीड इट वेरी केयरफुली. ओके, लेट्स सी कि कितनों का a lot of you got it incorrect. The correct answer here is D, beta. I'll tell you why. I'll go back to the previous slide and I'll show you. This was the question that you had in your hand. ठीक है,
ए बोलता है अंडर द पॉस्को एक्ट एनी ऑफेंस कमिटेड बाय अ चाइल्ड अंडर द एक्ट शैल बी डेल्ट विद अंडर द प्रोविजंस ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऑफ 2016। यहाँ पे ईयर गलत है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऑफ 2015 है, 16 नहीं, ठीक है। तो दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ए इसलिए गलत था। बी बोलता है ट्रीटिंग एन अक्यूज्ड हु इज 18 years and 2 months on the date of arrest as an adult is valid। नहीं, तुम्हें याद होगा ये केस के अंदर मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि मेघालय हाई कोर्ट ने एक बहुत ही प्रोग्रेसिव जजमेंट दिया है, जहां पे उन्होंने ये बोला था कि डेट ऑफ द अक्यूज्ड जो कि एक पर्सन है उसकी हमें डेट कंसिडर करनी है, द एज जो कंसिडर करनी है, ऑन द डेट कंसिडर करनी है जब वो ऑफेंस कमिट हुआ है, ना कि वो किस दिन अरेस्ट हुआ है ना। इस केस में यही हुआ था, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट है। सी बोलता है द एज ऑफ द अक्यूज ऑन द डेट ऑफ अक्रेंस ऑफ द क्राइम इज रेलिवेंट एज वेल एज ऑन द डेट ऑफ अरेस्ट। नहीं, इस हाई कोर्ट के जजमेंट ने बहुत क्लियरली लिखा था कि द डेट लाइक द एज इज टू बी डिटरमाइंड ऑन द डेट ऑफ अक्रेंस ऑफ द इवेंट। आपने किस दिन वो ऑफेंस किया है, दैट इज ऑफ रेलिवेंस टू हियर, राइट। तो यू नो दैट इज हाउ ऑप्शन नंबर, क्योंकि ए बी एंड सी तीनों ही तीनों इनकरेक्ट है, इसलिए डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो लेट्स एक सेकेंड, ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड, एक सेकेंड रुकना, एक सेकेंड बेटा, जस्ट अ मिनट, ओके, ठीक है। The Supreme Court has held that an insurer is clearly under a duty to inform policyholders about changes in the terms of policy during renewal, and failure to do so would amount to deficiency in service under the Consumer Protection Act of 1986. In light of the same, identify the incorrect option. A. Deliberately withholding information by such insurer to the consumer is deficiency of service. B. Any act which the prudent seller is supposed to do or is supposed to omit but deliberately does the contrast, such actions amount to deficiency of service. C. Making a misleading or a false representation regarding the need and the usefulness of any good or service amounts to unfair trade practice. And D, none of the above. I will give you a minute. रीड करो सारे ऑप्शंस को, फिर मैं तुम्हें ऑप्शंस की तरफ लेके चलती हूँ। Read? चलो, let's move on to the options. आई होप आपने क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ा हो। इज द करेक्ट आंसर ए, बी, सी और डी? जल्दी से बताइए। हमने इसके ऊपर क्लास में एक बहुत इलेबोरेट डिस्कशन किया है कि व्हाट वर द चेंजेस अंडर 1986, व्हाट वर द चेंजेस इन द एक्ट ऑफ 2019, व्हाट डज डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस मीन, व्हाट डज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मीन, और इसके ऊपर हमने बहुत अच्छे से पूरे फैक्चुअल सिचुएशन को भी समझा था। तो आंसर इट वेरी वाइजली, वेरी करेक्टली। अगर तुमने नोट्स को पढ़ा होगा जो कि क्लास में दिए गए थे, तो आई एम प्रिटी सर्टेन आपसे ये केस, ये क्वेश्चन अच्छे से बन जाएगा। 3, 2, 1 आंसर। वेरी गुड गाइस, द करेक्ट आंसर हियर इज डी। वेरी वेरी गुड, वेरी इम्प्रेस्ड बाय यू ऑल। हम तो यहाँ पे जो केस हुआ था जहां पे इंश्योरर ने अपनी पॉलिसी को जब रिन्यू किया था और जो इंश्योरेंस कंपनी थी उसने उनको चेंज टर्म्स नहीं बताए थे, तो कोर्ट ने क्या हेल्ड किया था कि वो डेफिशिएंसी इन सर्विस है, ठीक है। और डेफिशिएंसी इन सर्विस किन ग्राउंड पे है वो अपन क्लास में डिस्कस कर ही चुके हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, then now we move on to the news of November. Personal Data Protection Bill, which protects individual rights and governs the collection, movement, and process of personal data, is introduced in the Parliament, is associated with which of the following authorities? Moving on to the options. Question hope करती हूँ कि आपने ध्यान से पढ़ा है. The options are look at your screen, look at your phone, ध्यान से देखो. Options are UIDAI, TRI, IRDAI, Ministry of Home Affairs. I am pretty certain
तुम लोगों को ये आंसर सही जाएगा। नवंबर की न्यूज हमने यहाँ से शुरू की थी, तो अगर तुम थोड़ा सा रिप्ले करो वो पूरी बात को, तो तुम्हें आसानी से ये बात समझ में आ गई होगी कि क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर। कम ऑन गाइस, 5, 4, 3, 2, 1, go for it. Very good, guys. Very happy. I am very glad that you all got the, like, majority of you got the correct answers. You guys are revising. The answer is A, UIDAI. Okay, UIDAI, Unique Identification Authority of India. ये क्या करती है? ये हमारा 12 digit number of आधार assign करती है. What is TRI? Telecom Regulatory Authority of India. What is IRDA? Insurance Regulatory Development Authority of India, and Ministry of Home Affairs is obviously Ministry of Home Affairs. Very, very good. Very impressed by the fact that you guys are revising. Keep it up. Keep it up. Very impressed. Very impressed. Okay, moving on to the next question. The next question is, okay, we have a leaderboard. Okay, okay, okay. चलो देखते हैं कौन है. Okay, we have. Okay, ठीक है. We have Apurva leading, followed by Samir, then Angel, Aditi, and I believe there is something weirdly written. Abhi hai, shayad se I believe. He's given the fastest answer, and then there is Mohit, and followed by the rest. ठीक है? अच्छा एक चीज पूछती हूँ, तुम लोगों को कोई दिक्कत है क्या? मेंटी पे अपना नाम लिख दो ना, मतलब क्या दिक्कत जाएगी? क्या ऐसा हमें पता चल जाएगा, है ना? लिख दो इन केस यू आर गेटिंग द हाईएस्ट स्कोरर, सो यू नो दैट्स अ वेरी गुड थिंग टू डू। तो लिख दो ढंग से मेंटी के ऊपर नाम, है ना? चलो आगे बढ़े। ऑल पम्प्ड अप, आई होप यू आर एंजॉयिंग द सेशन। चलो आगे बढ़ते हैं। Oh, I think question नहीं डिस्प्ले हुआ है। Okay, through a tenure, through an ordinance, the tenure of ED director is extended by 2 years, 3 years, 4 years, or 1 year. जल्दी से बताओ। Option number A 2 years, option number B 3 years, option number C 4 years, or option number D 1 year. मैंने नवंबर की न्यूज में आपको बहुत क्लियरली बताया था व्हाट डज सीबीआई डज, व्हाट डज ईडी डू एंड एक्सवाईजी। तो और हमने यहाँ पे एक ऑर्डिनेंस भी डिस्कस की थी, हमने ये भी समझा था कि व्हाट डज ऑर्डिनेंस बेसिकली मीन। तो गो फॉर इट। 5, 4, 3, 2, 1, कम ऑन गाइस। Very good, very, very good. The correct answer here is 1 year. I think a lot of you got confused with 2 years here. देखो प्रोविजन ये था it can be extended by 1 year, but at max it cannot go beyond 2, है ना? यही प्रोविजन था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है बेटा? डी। अगर तुमने नोट्स ध्यान से पढ़े होंगे वहां पे मैंने क्लियरली ये बात इन बोर्ड्स भी मेंशन की है कि भाई ये कितने टाइम से एक्सटेंड किया जा सकता है। टॉकिंग अबाउट इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है ये हमारा इन्फोर्स करता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और पीएमएलए, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इन दोनों एक्ट्स में क्या क्या प्रोविजंस कवर्ड हैं, वी हैव डिस्कस्ड दिस इन द क्लास। इफ यू वांट यू कुड गो प्ले बैक द क्लास और यू कुड रीड योर नोट्स, ईदर वे। तो तुम्हें बहुत इजीली से समझ में आ जाएगा कि इनके अंदर क्या क्या कवर्ड है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। The Central Bureau of Investigation gets its power through which act? CBI Act of 1963, Central Investigation Agencies Act, Delhi Special Police Establishment Act, Central Vigilance Commission Act. The options are very close, but I'm very certain all those people who have attended the class, they will surely mark the correct answer. इसके ऊपर हमने बहुत elaborate discussion किया था। मैंने तुम्हें बताया था कि सीबीआई की पावर्स क्या रहती हैं, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इसका प्रेजेंट चीफ कौन है, इसका प्रेजेंट क्या इसका रोल है, एक्सवाइजी, हम पूरी इसके बारे में बात कर चुके हैं। सो गेट गोइंग गाइज, आंसर वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी हैप्पी फॉर यू ऑल। Delhi Special Police Establishment Act, option number C is the correct answer. Very good guys, very happy for you. चलो आगे बढ़े, ठीक है।
Okay, and just to you, for you to like, for those of you who've not attended the class for any reason, if you are not a part of LE or something of that sort, तो जो हमारी CBI है, it is a non-statutory body, ठीक है? In case अगर इस तरीके भी क्वेश्चन बन जाए तो, ठीक है? चलो भाई, moving on to the next question. The Honorable Supreme Court recently held that offences under special statute, including the SC/ST Act, can be quashed under section dash of dash. जल्दी से करो, जल्दी बताओ. इसके ऊपर हमने केस डिस्कस किया है नवंबर की न्यूज में. मैंने SC/ST प्रोविजन के ऊपर तुम्हें ये भी बताया था कि SC/ST एक्ट का काम क्या है, उसके अंदर आप कब कब केस कर सकते हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. और एक सेक्शन ऐसा है, आई थिंक since the month of October we've been discussing this very question, this very section time and again. In case you want a hint here, A, B, C, D, जल्दी बताओ. Very good, guys. The correct option here is A. Section 482 of Criminal Procedure Code. ठीक है, तो उसके अंदर यहाँ पे हम quash कर सकते हैं. अच्छा, so now SC/ST Act हम कब invoke कर सकते हैं? इन यहाँ पे कोर्ट ने क्या बोला था कि not every act in which the victim is an SC/ST आप इस इस particular act को invoke कर सकते हो. सिर्फ वहां पर ही invoke कर सकते हो where if and only there is any kind of a कास्टिस्ट अटैक. सिर्फ और सिर्फ तब आप SC/ST एक्ट को इन्वोक कर सकते हैं. और इसके अंदर भी अगर आपको क्वॉश करना है कोई केस, तो आप वो कहां करोगे? सेक्शन 482 ऑफ CRPC. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई थिंक कुछ लोग बी ऑप्शन में कंफ्यूज हो गए थे, सीइंग सिमिलर नंबर्स, बट दे आर सिमिलर नंबर्स, वो सेम ऑप्शन नहीं है. ठीक है, चलो आगे बढ़े बेटा. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which High Court recently held that if the motive for crime is not a casteist attack, then the provisions of SC/ST Act cannot be invoked. चलो, याद है मैंने बताया था नवंबर की न्यूज में, मैंने आपके साथ दो प्रोविजंस डिस्कस किए थे, दो केसेस डिस्कस किए थे ऑफ द SC/ST एक्ट, राइट? तो वो क्या है, कौन से हाई कोर्ट ने वो जजमेंट दिया था, जल्दी से बताओ. मैंने तुम्हें ये भी बात बोली थी कि सिमिलर टाइप ऑफ जजमेंट्स अचानक से चमत्कार से वो एक साथ नहीं हो जाते हैं. दैट इज मी डूइंग इट. और मैंने यहाँ पे बहुत करेक्टली इम्फेसिस किया था कि ये देखो, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है और ये इस कोर्ट ने बोला है. ये इस कोर्ट का नाम तुम्हें बताना है. चलो बताओ जल्दी से. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, कर्नाटका हाई कोर्ट. Very good, guys. Very good. Karnataka High Court is the correct answer. Option number D is the correct answer here. Very good. Very impressed by you all. चलें आगे बढ़े. आई होप यू आर एंजॉइंग द सेशन. आज का सेशन हमारा थोड़ा जरूर लंबा है, बट वी आर कवरिंग 2 months here, तो आई होप कि नोबडी इज रिग्रेटिंग ज्वाइनिंग टुडेज सेशन. एंड आपको बहुत मजा आ रहा होगा कंसिडरिंग आप रिविजन करते चल रहे हैं, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि वील बी हैविंग अ क्विज सून, तो रिवाइज योर थिंग्स. तो आई बिलीव कंसिडरिंग कि इतने सारे लोग करेक्ट आंसर दे रहे हैं, तो आप लोग रिवाइज कर रहे हो. नहीं कर रहे हो तो प्लीज कर लो यार, है ना? इतना टाइम नहीं बचा है क्लैट के होने में, तो रिवाइज इट every now and then. We tend to forget things, right? Human memory tends to forget things. Moving on to the next question. The next question is Honorable Dash High Court has held that linkage of Aadhaar is no reason to deny benefits under Dash. सिंपल है क्वेश्चन, बहुत डिटेल्ड डिस्कशन हमारा हुआ था कि विच हाई कोर्ट हैज हेल्ड व्हाट, एंड मैंने तुम्हें बहुत सारी यहाँ पे गवर्नमेंटल स्कीम्स भी बताई थी. ठीक है, तो अगर मैं वो वर्ड बोल दूंगी तो तुम करेक्ट आंसर पे चले जाओगे, विच आई विल नॉट डू. आंसर ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली एंड फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, या बॉम्बे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, या सी Bombay and National Food Security Act, or D, Delhi and National Food Security Act. The options are very close, but okay, the Bombay High Court has held that, guys, and it had held that linkage of Aadhaar is no reason to deny benefits under the Food Security Act, है ना?
उन्होंने यहाँ पे एक और बात क्या कही थी बॉम्बे हाई कोर्ट ने कि आधार इज वन ऑफ द वेज बाय विच यू कैन आइडेंटिफाई अ बेनिफिशियरी, इट इज नॉट द सोल क्राइटेरिया। भैया आपके पास आपका राशन कार्ड भी है, आप उसके बेसिस पे भी लोगों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और यहाँ पे तुम्हें याद होगा मैंने ये भी बात बताई थी कि प्रॉब्लम आती कहाँ है कि लोगों के जो आधार कार्ड है उन्हें वो फॉर एग्जाम्पल रिसाइड कर रहे हैं इन एक्स स्टेट, लाइक फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दे आर रिसाइडिंग इन भोपाल बट दे आर गोइंग टू वर्क इन बॉम्बे और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो भाई यहाँ से आ रही थी प्रॉब्लम, राइट? तो इसके ऊपर हमने बहुत डिटेल डिस्कशन किया था कि व्हाट हैपेंड इन द केस, कि गवर्नमेंट के क्या आर्ग्यूमेंट्स थे और फिर कोर्ट ने क्या हेल्ड किया था एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मैंने बहुत सारी तुम्हें इसके अंदर स्कीम्स भी बताई थी व्हिच आर रन बाय द गवर्नमेंट। चलो, here in any case we'll move on to the next question. Okay, we have a leaderboard in front of us now and okay. अपूर्व, ओके ठीक है, चलो आई वाज एक्सपेक्टिंग अपूर्वा टू लीड बट वेरी गुड समीर, समीर इज बैक द फर्स्ट पोजीशन नाउ। अपूर्वा has come second, then there is अभी है still on the third position and there is Angel। ठीक है, चलो let's move on to the next question and Abhinav Kumar being the fastest। चलो very good Abhinav, and very good Sameer, अपूर्वा, अभी है, ठीक है अभी है। इट्स a request please नेक्स्ट टाइम मेंटी क्विज में नाम बदल देना, आई कांट रीड द वे इट इज रिटन, राइट? चलो आगे बढ़े, चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकाटा हाई कोर्ट हैज इम्पोज्ड complete ban on the use of firecrackers in the state of West Bengal. Supreme Court set aside the Calcutta High Court judgment and allowed the use of only green crackers. Green crackers are developed by, ये हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से बताया है व्हाट आर ग्रीन क्रैकर्स। अच्छा, फॉर दोज ऑफ यू हु नॉट इन द क्लास, ग्रीन क्रैकर्स आर नॉट रस्सी बम, ठीक है? कुछ भी मत सोचना। चलो, आंसर वेरी क्विकली नाउ, look at your phone, be very vigilant, and the options are NEERI, National Environmental and Engineering Research; B, CSIR, Council for Scientific and Industrial Lab; C, both A and B; and D, National Chemical Laboratory. Those of you who've attended the class, I am pretty certain आपको ये बात समझ में, ये ऑप्शन आपका करेक्ट ही आप मार्क करोगे। हमने इसके ऊपर बहुत एक इलेबोरेट डिस्कशन किया था कि ये कब जजमेंट आया था। ये जजमेंट आया था अराउंड द टाइम ऑफ दिवाली, जब नवंबर में थी। तो क्या हुआ था इसका पूरा मैंने तुम्हें बैकग्राउंड भी दिया था कि कब ये बैन हुआ था, कब फिर ग्रीन क्रैकर्स की बात आई थी। वेरी गुड गाइज, आई एम हाईली इम्प्रेस्ड बाय यू ऑल। द करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी, नीरी एंड सीएसआईआर, ये ग्रीन क्रैकर्स डेवलप करते हैं। ग्रीन क्रैकर्स क्या हैं? ग्रीन क्रैकर्स वो क्रैकर्स हैं विच आर फ्री फ्रॉम आर्सेनिक एंड बेरियम, ठीक है? वेरी गुड, आई एम हाईली इम्प्रेस्ड बाय यू ऑल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। As per the order of Orissa High Court, traders permitted only for the sale and use of green crackers, and for that traders have to obtain a certificate from। अभी हमने क्या बात की थी इससे पहले क्वेश्चन में कि वो ग्रीन क्रैकर्स कौन बनाएगा। अब हम बोल रहे हैं कि सर्टिफिकेट आपको किससे ऑब्टेन करना है, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। चलो लेट्स मूव ऑन टू द ऑप्शन। The options are, be very vigilant towards the screen. The options are just coming. Council for Scientific and Industrial Lab, Petroleum and Explosive Safety Organization, National Environmental and Engineering Research, and National Chemical Laboratory. Which of the following do you think is the correct? हमने ये न्यूज नवंबर में करी थी, दिवाली के आसपास, और मैंने तुम्हें पूरा इसका बताया है कि भैया कौन सर्टिफिकेट देगा, कौन ग्रीन क्रैकर्स को बनाएगा, what was the ban, why was the ban lifted, and so on and so forth. So get going guys, 5 4 3 2 1। ओके ठीक है, द करेक्ट आंसर इज बी हियर गाइस, डू नॉट गेट कंफ्यूज। ये बनाएगा कौन? नीरी और सीएसआईआर बनाएगा, बट इसका सर्टिफिकेशन कौन देगा? पेसो।
पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कंफ्यूज मत हो, बहुत इजी आंसर है इसका। ये हमने बात क्लास में भी डिस्कस की है कि नीरी और CSIR बनाएंगे और पेसो इसका सर्टिफिकेशन करेगा। पेसो इज पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेड ऑफिस इज इन पुणे, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। Next question. We are approaching towards the end now. Guidelines with respect to the timelines for completing age determination of juvenile was issued by the Honorable Delhi High Court, and according to the guidelines issued, the process of age determination should be completed within. जब ये मैंने केस तुम्हारे साथ डिस्कस किया था तो मैंने बताया था कि गाइज इस बार एज पर व्हाट आई थिंक कि इस बार जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के ऊपर एक आध क्वेश्चन जरूर फंसेगा, कंसिडरिंग देयर हैव बीन सो मेनी डेवलपमेंट्स। तो लेट्स सी इफ यू गेट दिस आंसर करेक्ट। आई एम प्रीटी सर्टेन तुम लोग कर ही लोगे। हमने इसके ऊपर क्योंकि बहुत इलैबोरेट डिस्कशन किया है। A 20 days, B 25 days, C 10 days, D 15 days. What do you think is the correct answer? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पे काफी डेवलपमेंट्स हैं, तो आई एम प्रीटी सर्टेन कि तुम लोग ये सही आंसर दोगे, क्योंकि मैंने तुम्हें क्लास में भी इसके ऊपर बोला है कि गाइज रिमेंबर दिस कैन बी वन ऑफ द प्रोबेबल क्वेश्चन इन योर एग्जाम। मैंने बेंच पे तुम्हें बताई थी, बट बेंच के ऊपर एक सेपरेट क्वेश्चन है, तो आई वोंट बी टेलिंग यू द बेंच का आंसर अभी। 5 4 3 2 1। ओके, द करेक्ट आंसर इज D 15 days. Very good guys, very good, keep it up. I am very happy for you all. यहाँ पे अपने बहुत क्लियरली डिस्कस किया था कि 15 days will operate from when, कि right from the time the child is being produced before the juvenile justice board, आपको तब से इसका एज डिटर्मिनेशन करना है। फिर अपन ने बहुत अच्छे से बात की थी कि व्हाट इज एन ऑसिफिकेशन टेस्ट, कि कब हमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कंसिडर करना है, कब हमें ऑसिफिकेशन टेस्ट के ऊपर जाना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। We are approaching towards the end. 24th question. On to your screens now. चलो डिस्कस करते हैं। Which honorable high court has held that agreement clauses that prohibits keeping pet in residential unit is illegal? A. Kerala High Court, B. Karnataka High Court, C. Delhi High Court, and D. Maharashtra High Court. चलो जल्दी से आंसर करो। यहाँ पे इस केस में वी हैड डिस्कस इन डिटेल एज टू व्हाट आर द काइंड्स ऑफ राइट, और यहाँ पे हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट केस भी किया था व्हिच बेसिकली डेल्ट विद द राइट्स दैट एनी पर्टिकुलर एनिमल हैज। चलो जल्दी बताओ, A, B, C और D। 5 4 3 2 1। टाइम्स अप। वेरी गुड गाइज, द करेक्ट आंसर हियर इज केरला हाई कोर्ट। यहाँ पे उन्होंने बोला था कि पेट ओनर्स के भी कुछ राइट हैं, दैट इफ दे वांट टू कीप अ पेट इन अ रेसिडेंशियल यूनिट देन ये दे कैन डू सो। और उन्होंने कहा था लेकिन आप यहाँ पे जो रखना चाहते हैं ये एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है, इसके ऊपर भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है, और यहाँ पे याद होगा तुम्हें मैंने एक एग्जांपल दिया था ऑफ यू कीपिंग अ क्रोकोडाइल, कि वो अलाउड है कि नहीं है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। तो जिसको मैं बोली थी अरे मेरा क्रोको एंड XYZ है ना, तो वहां से तुम याद करो कि ये मैंने किसके ऊपर जजमेंट बताया था, मैंने बताया था ऑन टू केरला हाई कोर्ट। ठीक है गाइस, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके देन, डिटरमाइन द बेंच स्ट्रेंथ in the Delhi High Court judgment where the court has issued guidelines with respect to timelines for completion of age determination of the juvenile। जो हमारा लास्ट सेकंड क्वेश्चन हुआ है उसके ऊपर है ये क्वेश्चन। चलो डिस्कस करते हैं। एक सेकेंड ना, ओके। सिंगल जज बेंच, डिवीजन बेंच, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच और द फुल बेंच। जल्दी बताइए कि किसने वो जजमेंट दिया था कि दैट द एज डिटर्मिनेशन ऑफ द जुवेनाइल इज टू बी कंप्लीटेड विद इन 15 days of you producing the juvenile before the juvenile justice board? Was it a single judge bench? Was it a division judge bench? Was it a constitution bench? Or was it a full judge bench? हमने इसके ऊपर नाम भी डिस्कस किए हैं क्लास में कि किसने किसने वो जजमेंट दिया है। तो अगर तुमने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की क्लासेस थोड़े ध्यान से करी होंगी तो तुम्हें जरूर से आंसर आएगा। चलो जल्दी से बताओ मुझे। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, वेरी इम्प्रेस्ड, हाईली इम्प्रेस्ड रादर आई मस्ट से। द करेक्ट आंसर इज बी, डिवीजन बेंच। यहाँ पे जस्टिस सिद्धार्थ मधुल
and Anup J. Bambani had given this judgment wherein they were stipulating guidelines. Very, very good. Keep it up. Now, I believe we'll be approaching our last question. Or last second question, I believe. Recently, Honorable Allahabad High Court has asked UP government to reevaluate cases for remission for 14 years of incarceration, even if the appeal is pending in the High Court. Which of the following means substitution of one form of punishment with a lighter form of punishment? ठीक है, चलो इसके ऊपर बहुत डिटेल डिस्कशन हुआ है हमारा कि विच टर्म मींस व्हाट। ठीक है, तो मैं ऑप्शंस दिखाती हूँ तुम्हें। आई एम प्रिटी सर्टेन कि तुम लोग करेक्ट आंसर्स दोगे। तो लेट्स सी कि क्या है ऑप्शंस। चलो, ए रेमिशन, बी रिस्पाइट, सी पार्डन एंड डी कम्यूटेशन। जल्दी से आंसर्स दो। ए, बी, सी और डी, इसके ऊपर हमने बहुत डिटेल डिस्कशन किया है। व्हाट डज रेमिशन मीन्स, व्हाट डज रिस्पाइट मीन, व्हाट डज पार्डन मीन एंड व्हाट डज कम्यूटेशन मीन। Last 8 seconds. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Last question. Come on, guys. Buck up. Okay then. मुझे लगा था आप लोग को ये सही जाएगा, but then the correct answer here is D, commutation. ठीक है, बिफोर वी रैप अप आवर सेशन मैं तुम्हें एक थोड़ा सा जिस्ट दे देती हूँ। रेमिशन में क्या होता है कि आप रिड्यूस करते हो सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द कैरेक्टर। अब इसके एग्जाम्पल्स ये सब तुम क्लास में जाके देख लेना, मैंने रिकॉर्डेड जो वीडियोस हैं उसके ऊपर मैंने तुम्हें बताया है। रिस्पाइट क्या होता है, ऑन टू नोइंग ऑफ अ न्यू इन्फॉर्मेशन व्हेन यू रिड्यूस द सेंटेंस। यहाँ पे मैंने एक प्रेग्नेंट लेडी का तुम्हें एक एग्जाम्पल दिया था, दैट इज रिस्पाइट। पार्डन क्या होता है कि आप ऑल टुगेदर किसी के सेंटेंस को अब्सॉल्व कर दें। एंड कम्यूटेशन क्या होता है, आप सब्स्टिट्यूट करते हैं one form of punishment with a lighter form of punishment. That is exactly what the question was, and the correct answer here is D. So, guys, with this, we are done with our today's session. I hope you all had a nice session. For more such interesting, sessions, please ensure कि आप हमारे channel को subscribe करें. You will be getting more such information, and let us know if you want any other help from our side. If you want more such quizzes or anything of that sort, LegalEdge will be right there to help you. So see you in the next session. Bye-bye. Have a nice day. Okay, so forgot to show you all the leaderboard. एक second leaderboard देखते हैं और फिर हम खत्म करते हैं आज के सेशन को। ठीक है, very very good guys, very very good. Huge round of applause to Sameer. Sameer is the is leading at the first position, followed by Apurva and Angel. Very good, Sameer. Very very good. Very impressed with your performance. So guys, हम आज के सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, और जो क्वेश्चंस मैंने आपको पूछे थे ड्यूरिंग द सेशन, I am hoping to get those answers in the comment section below. I'll be going through your comments today itself, and let's see कि तुम्हारे comments क्या सही हैं कि नहीं हैं, जो भी मैंने तुमसे questions पूछे थे। ठीक है, चलो, bye bye guys, have a nice day, good night.